हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम सॉरी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, बट इट्स ओके। क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा गाना है। इट्स अ पंजाबी ट्रैक एंड आई जस्ट शो यू हाउ इट साउंड्स। सो हम सिर्फ पहला वर्स देखते हैं कि कैसा साउंड करता है। ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬਾਲਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਕੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬਾਲਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਕੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਸੋਹਣਿਆ। Alright, so it's very good. It's very vibey. It sounds like it's in space. मेरी दिमाग में ये थीम थी कि oh space, this is space. So let's just go through what everybody wants to know first. Let's just see how I made the drums, because ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा important drums होते हैं, I think. So this is a drum group. Let's call it drums, because I have not yet. I do not know why. And these are our synths. If you can hear my अगर आप मेरा कीबोर्ड सुन सकते हो, I'm sorry about that. I'm working on हम ऑडियो बेहतर करेंगे अगली वीडियोस में, but it's just what we have to do now. So let's see what the drums do, what the drums are doing. So they're very simple, but the important thing is that they're doing some grooves. Like we're doing some grooves. I do not know how to say that. Let's see. How do I pull up Groove Pool, bro? Actually, it's just frozen, so I don't have to. So these are the hi-hats. And you can see that they're just a little bit off-timed, every other one, because क्योंकि हर पंजाबी song में ऐसा है, okay? It's not just me, हर पंजाबी गाना ऐसा करता है. I shouldn't say every पंजाबी song, क्योंकि अब like we're changing things now, but पहले हर गाना ऐसा होता था, और मेरा मन था इस गाने में बहुत ज़्यादा ऐसी feel आ रही थी, तो I did it, okay? And then we have like some perks. So it's a tom. And the first thing is let's see what the kick and snare are doing. And remember, the kick is also swung, so it's not ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ. If the kick was doing this, so हर trap गाने में ऐसा होगा, ठीक है? और it's and let's do quantized hats. So it's very very stale. काफ़ी ज़्यादा सीधा लगता है इससे गाना, versus me doing this, I guess. So like there's a you can nod your head, like आपको सिर ऐसे हिलाने का मन करता है. It's just a thing, I don't know, I did it, okay? So after that, I started it with this. After all the drums and hats, I added this. And again, it's not quantized. ये देखो off यहाँ पर होना चाहिए था अगर हम by the rules if we do it, पर हमने इतना gap लिया है. So okay, and उसके बाद हमारा ये tom.
और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बेस भी ज़्यादातर ड्रम वाले ग्रुप में डालता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रोसेस इकट्ठा करने में इजी लगता है. And we have this. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. So अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग क्या करी है हमने ड्रम्स के साथ. So I'll delete like the second kick that we just added for whatever reason. Okay, so the first of all, let's see the kick. Nothing, just EQ, and in the snare a little bit of EQ. Nothing on the perks, nothing on the hats, and then we come to so I've grouped all the percussion, and ये सब साइड चेन हो रहा है हमारी किक से, ताकि जब किक बज रही है उसके साथ में कुछ भी नहीं बज रहा. So it takes away all the hi-hats and percussion when the kicks hit, and then everything in the group has a little bit of EQ. just मेरे को लगा कि ज़्यादा low end है, and not really doing anything, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटिंग कर रहा हूँ मैं, उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. It's very simple, it's very subtle, and after some in the chorus, like, we have a lot of stuff. So let's see. So okay, now अब देखिए इसमें क्या करते हैं. Okay, अब क्योंकि हमने सिंपल बीट रखनी थी, क्योंकि जो गाना है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, जैसे अपनी रिदम चेंज करती है, अपनी वोकल रेंज चेंज करती है. सो इट्स वेरी डायनामिक द वोकल्स इन द सॉन्ग. सो उसके लिए हमें इसे सिंपल रखना था ड्रम बीट को, तो हमने इसे ज़्यादा चेंज नहीं किया है, पर हमने इसे लेयर किया है. सो पहले जब स्नेयर बजता था उसमें सिर्फ ये था. लेट्स जस्ट सोलो आउट द किक एंड द स्नेयर. सिर्फ ये चलता था. ओके, एंड आफ्टर दैट एंड द सेकंड वर्स एंड द कोरस वी हैव दीज. तो ये एक अनदर लेयर है जो आपको हेल्प करती है टेक्सचर देने में और वेरिएशन देने में एक ट्रैक में. एंड आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट लेट्स सी. जस्ट लिटिल, क्योंकि हर 4 बार के अंदर कुछ होना चाहिए, तो हमने एक फिल डाल दी, और उसके बाद एक और फिल आफ्टर द 8th बार. Or that's really it, except for these guys. We have these as snares. So these are very fun, okay? I want to show you these because ये मैंने actually record किया है ये सब. So this is so if you can hear it, let's see. तो मैंने क्या किया है, इसे एक प्लास्टिक वाले कप में मैंने पानी डाला और मैं ऐसे शेक कर रहा हूँ उसे. सो अगर आपको साउंड समझ में आ रही है, सॉरी मैंने माइक हिट किया. राइट, अब सुन सकता है आपको. और फिर उसके बाद मैंने इसे व्हाट आई डिड वाज, अब इसकी मैंने वॉल्यूम कम कर दिया. ओके, अब मैंने इससे पहले रिदम दी क्योंकि मेरे को चाहिए ये हर स्नैर पर. ओके, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाली थोड़ी नॉइस, क्योंकि थोड़ा हाई एंड चाहिए. और फिर उसके बाद मैंने कोरस डाला, वाइड चाहिए हमें साउंड, राइट. और फिर ओवरड्राइव, क्योंकि जब भी आप कोई क्लैप, जैसे मैं इसको बनाना चाहता था कोई क्लैप की तरह जैसे, और ज़्यादातर हर क्लैप साउंड यूजुअली आपको होना नहीं चाहिए, पर हर क्लैप साउंड का फंडामेंटल और द मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लैप इज़ अराउंड 1000 हर्ट्स. तो मैंने उसे बूस्ट किया और उसके अंदर मैंने ड्राइव डाली. एंड आफ्टर दैट ड्रम बस, क्योंकि मेरे को ट्रांसिएंट्स चाहिए, ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, इस पर नोटिस करिए प्लीज़. राइट, और मेरे को यही और चाहिए था, राइट.
राइट अब ये 2 के बिना सुने और 2 के साथ सुने. ओके, सो विदाउट द ड्रम बस इट्स गुड बट इट्स नॉट पंची. हमें पंच चाहिए, राइट. अब पंच आ गया है और उसके बाद हम बस EQ कर रहे हैं, शेपिंग अप द साउंड. क्या क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए. अगेन we're boosting the body a little bit, right. और इन सब के साथ हमारे ड्रम्स अब साउंड करते हैं ऐसे. और थ्रू आउट दिस सॉन्ग प्लीज़ हम ध्यान देना कि हमने अरेंजमेंट कैसे किया है, क्योंकि थ्रू आउट द सॉन्ग लाइक पूरे गाने में हमारे ड्रम्स सेम है, राइट. तो हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग एरियाज़ में यूज़ करते हैं. जैसे जब ब्रेक है तो सिर्फ टॉम्स बज रहे हैं. लेट्स सोलो आउट द सिंथ्स एंड द ड्रम्स. सो हम वोकल नहीं सुनेंगे अभी. राइट, सो ये हमारा वर्स है, पता चल रहा है, ठीक है. ये ब्रेक आ गई, ये हमारी ब्रेक आ गई है. तो आप देखते हैं एनर्जी लो हो गई है. तो आप देख सकते हो जैसे आपने वर्स लिखा हुआ, बट दिस इज अ कोरस बिकॉज लिरिक्स यहाँ पर कोरस वाला है. ओके, सो द एनर्जी इज हाई. So the energy is high here, right? After that, we have a break. Energy low, फिर जैसे हम वर्स में जाते हैं. Okay, ये पहला वर्स है. जैसे I mean ये पहली वेरिएशन है हमारे ड्रम्स की. फिर उसके बाद सेकंड वेरिएशन आ गई. तो आप देख सकते हो जैसे हमने फिल्स वगैरह ऐड किए हैं. जैसे फर्स्ट ड्रम्स में पहले 3 बार ड्रम्स बजते हैं. तो जैसे हमारी फिल पहले कोरस में हमारी फिल क्या है, हम ड्रम्स बंद कर देते हैं. सेकंड वर्स में हमारी फिल है एक्चुअल लाइक ड्रम फिल. सो हम अपने स्नेयर्स को बदलते हैं. So another variation, right? But it's still the same rhythm. हमारी rhythm अभी भी same है, बस एक fill add किया. It's very simple, it's very nuanced. बहुत ज़्यादा changes नहीं किए हमने. पर sometimes आपने सुना है simplicity is key, and that is true, but to a certain extent. कभी आपको चाहिए होता है वो, कभी नहीं. In this case हमें यही चाहिए था. Okay? Again, a small fill, and then in this chorus we take the drums away again. अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमने शायद ऐड करी है. हमने कुछ भी ऐड नहीं करा एक्चुअली. सो दिस इज़ वेरी गुड. हमने बस टेक अवे किया सब कुछ. एंड दिस इज़ अ ब्रिज. वी डोंट हैव एनीथिंग. वी हैव टू. हाँ, अब जैसे जब ये आ जाता है, जैसे वी हैव अ ब्रिज हियर. I'll play the whole song right here क्योंकि bridge it changes a little bit here. चली सुनिया तेरे इश्क ने शाही चुकाती वे कुड़ केड़े राही पाती वे जो कल जुबानों कहना सुकाओगी तो मेरे चुभ खाती वे.
Alright, so I hope you heard these snares. तो ये क्योंकि यहाँ पर सब लॉस्ट था, वी डोंट हैव एनी रिदम, एंड जो हमारी वोकलिस्ट है शी इज़ नॉट डूइंग एनी रिदमिक मूवमेंट, तो इसलिए हमें एक फाउंडिंग रिदम चाहिए, लाइक फाउंडेशनल रिदम चाहिए, तो वो हेल्प करती है इसमें. तेरे इश्क ने स्याही चुकाती वे कुड़ी. Right, now you heard it. Now you hear it. So after this we have, let's go to synth, because इस गाने में actually I did a lot of things, and ये सब VSTs हैं, audio manipulation, some things like that, because I use VSTs a lot, but some of it is like, let's say these are samples. बट जब भी जो भी आप ऑडियो फाइल्स देख रहे हैं वो हम सब ने वी एस टी फाइल्स को, आई मीन वी एस टी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ सैम्पलर्स यूज़ कर रहे हैं. सो लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ द सिंथ्स अगेन. Okay, so I'll show you we have a lot of modulation here, so turn this off. This is honestly, this is the reason that I love Ableton, because it's just so easy to tuck things away like this. Let's say this is 4, right? If I group this is just 1 now. This is why I love Ableton, because I have OCD. I don't have OCD, but it's just sometimes I need some organization in my life. So let's see, this is the foundation. First of all, these are our chords, so let's hear them out. Very vibey, and I'll show you without the processing like what these sound like. And I think I honestly know, like, this ये हमारा एक preset है. अगर आपको जानना है कि how can we make sounds like this, please let me know in the comments. Yes, see, it's very simple here. So I'll show you what this is doing. Okay, this is where the sauce is. Let's see, Redux. Yes, so this takes it to the next level. Okay. After that, we have a melody loop. Yeah, this is a sampler thing that I did, and I chopped it up, so it sounds really nice. Another sampler thing that I did was kalimba. Yeah, so this is very nice. It's turning out to be a really मैंने आपको बताया theme was space, right? So the theme was space, and let's see what we have added. We've added a weird instrument that I don't know, ये मेरे को पता नहीं क्या है, a kalimba that's reverbed out बहुत ज़्यादा space में है. And so without, actually, let's talk about space. So जो space की बात कर रहा हूँ मैं, it comes from this reverb. Without the space, it sounds like this. See, it still has it, but it's not as good. The space is literally this thing. So this reverb is जैसे आप लोगों को ज़रूरत नहीं है VSTs की, first of all, let's get that out of the way. पर I wanted to try something out. अगर मेरे को यही अगर मेरे को बनाना होता, तो मैं एक हाइब्रिड रिवर्ब लेता और एक redux लेता, और I would have gotten the same thing. पर I just did it, okay? So we have this, and after that we have a pad. So collectively right now we have this.
right? And I add this to okay, another little element, and then we have a pad. Yeah, so the pad is like a vocal sample thing. And then we have this. Yeah, this is another sampler. Okay, and then there's some textures that just go on throughout the whole song, and this is them. So a texture is just everything that gives you an ambience. So एक टेक्सचर ऐसी चीज़ होता है जो आपको एक स्पेस में ले आता है या आपको एक फील प्रोवाइड करता है, एक इमोशन या फिर कुछ भी ऐसा. तो लेट्स से अगर आप बारिश की कोई साउंड इफेक्ट ला रहे हो, वो आपको एक स्पेस में डाल देगा. जैसे वो आपको एक इमोशनल स्पेस में डालेगा कि ओ इट्स अ सैड सॉन्ग, या फिर वो आपको एक ऐसे लो-फाई सॉन्ग की तरह डाल सकता है कि आप घर के अंदर हो पर इट्स रियली नाइस. सो जैसे आप टेक्सचर का यूज़ करते हो इट डिपेंड्स, पर टेक्सचर इज़ अ ग्रेट वे to add some feel, add some emotions to the song. And then we have this. It's just a hit. So a hit is another just an effect. हम इसको एक effect की तरह यूज़ करते हैं. जैसे हर एक first step पर एक effect यूज़ होता है, जो आपको एक melodic, जो आपको एक transition लेकर आता है कि आप इस section से इस section में जा रहे हो, और ये प्रोवाइड करता है. और बाय द एंड वी हैव जस्ट a guitar loop, and with the drums it sounds like this. And it's just a sample. I don't know how to play guitar, at least not this good, right? So it's just a sample. I've pitched it up and I did edit some notes, right? Right, so I just edited it, but it's not my guitar. I don't know how to play guitar, just for the record. We have a snare like I showed you earlier. Right? Okay, so now to the meat of the song. Let's go to the vocals, and I guess you know what they sound like. So I usually have a lot of like processes that I go through. So this is the chain that we went with. I have had like multiple chains. So like this is a different chain. So in har ek gaane mein, I have a basic vocal chain that I just put on so that whenever जब भी कोई गाना गाता है और जैसे ही वो बूथ के बाहर आता है और उसे सुनना है कि ये गाना कैसा लग रहा है, I just put it on because आपको एक हल्की सी पॉलिश चाहिए होती है. पर आफ्टर दैट मैं हमेशा एक नई स्टार्ट करता हूँ. मोस्ट प्रॉब्ली आई स्टार्ट विद एन EQ, कंप्रेसर, ऑटो ट्यून, समथिंग लाइक दैट. पर इस गाने में हमने क्या किया पहले. सो आई जस्ट अनफ्रीज दिस फॉर यू. Hopefully this doesn't go to shit. So I'll duplicate that first. Yep, and then unfreeze this. Then I'll show you. So this is the vocal, and this is what it sounds like before any processing. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਕੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. So it's a good vocal, but it still has some things that you can always be better. So I'll just go one by one. One by one it is. So an EQ first. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ, I hate this. I'm gonna turn off the reverb. मैंने अभी reverb बंद किया है. I'll show this to you again. तो हमने बंद किया है ये जो mids is a little bit
मिड्स के साथ मेरा वास्ता सही नहीं है, पर they're the best vocal range, they're the best frequencies, and आपका पूरा गाना mids में ही होता है, and that is why they're the hardest. All right. So after that we have a soothe. I'll show you what. So soothe में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको कहते हैं delta. So delta is basically what is taking out, what the soothe 2 is taking out. So तो ये सब ये ख़राब चीज़ें निकाल रहा है, okay? And after that we have controlled EQ. So okay, हर बार ये वोकल चेन बदलेगी like I said, पर कभी कभी लोग कंप्रेसर पहले डालते हैं, EQ बाद में डालते हैं, पर I like it. I like doing EQ first and then compression afterwards, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे जो फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए वो कंप्रेसर में जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. So after that we have a compression, we have a compressor. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. So it's good, but it still has some weird artifacts. After that, we take out some 1 kilohertz. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ. Yeah, so it's doing a little bit, and then we have ab we deal with the mids. So let's see. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. So this is a little too much. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ. And this is nothing. So ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ. So this is our middle ground. So everything below. सी ये सी सब मुझे नहीं पसंद, ओके? तो हमने ये सब निकाल दिया. अब पूरा नहीं निकाला है, पर हमने मैनेज किया है, ओके? एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑटो ट्यून. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ. Right, auto tune, everybody knows that. Everybody knows auto tune, so don't have to talk about it. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ. This is a chorus. I don't know why, but मुझे ये करना पसंद है. I don't know if anybody else who does this, but this is something I do, and it adds a little bit of the width. So let's hear it before and after. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ. ये बस इसको थोड़ा सा पॉलिश कर देता है, because क्योंकि जब भी कोई नाक से गाता है ना, उसमें एक हार्शनेस होती है, और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है निकालनी. तो उसके लिए मैं कभी कभी कंप्रेस कोरस यूज़ करता हूँ, या फिर मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ करूँगा मैं, और उसमें जो वोकल जो भी मेरे को फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं लग रही है, मैं उसे कोरस कर दूंगा. आई डोंट नो व्हाई, पर उससे मेरे को लगता है वो कभी कभी सही कर देता है. पर देयर इज़ डिफरेंट वेज दैट आई डील विद इट, बट अभी मैंने ये किया है. और इसके बाद हमारे पास है एक EQ. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. And then the final thing is this. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ. Okay, see, space again. मैंने ये क्रिएटिव चॉइस ली कि इसमें मैं रिवर्ब बहुत ज़्यादा लंबा रखूँगा, ओके? और ज़्यादातर ये पंजाबी गानों में नहीं होता है, पर सी द रिवर्ब इज़ 11 seconds long. It's very, very big, way too big for this. ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਕੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗਲੀ ਸੋਹਣਿਆ. And the delay is basically the same, but हमारे पास एक delay है front में और reverb कम है, और ये सब साइड चेन हो रहा है इसके साथ, एक कंप्रेसर के साथ. और मास्टर में इसके ग्रुप में आई ऑलवेज हैव अ ग्रुप ऑफ एवरीथिंग. सो जैसे अगर हमारे पास एक वोकल है, मुझे पता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वोकल होगी,
तो मैं उसका पहले एक ग्रुप बना देता हूँ और फिर मैं उसे फिर मैं उसे प्रोसेस करता हूँ जस्ट लाइक आई वुड एनी अदर थिंग. सो इसके अंदर हमारे पास एक सूद है. तू जो तो बैठी हूँ मैं गली सोनिया. ये इसमें ये सब निकाल रहा है और वी हैव दिस थिंग. तू जो तो बैठी हूँ मैं गली सोनिया. चित नाल लग जावां गली सोनिया. सुल्फां दी छां दा बथेरे बाल दे ना मैं ते तो बिना बक्की किते चली सोनिया. ओके सो EQ. और आपने अभी नोटिस किया होगा कि मैंने अभी एक चेंज किया. ऑलवेज चेंज एज यू गो. अगर आपको लग रहा है कि ओ ये वैसा नहीं साउंड कर रहा कि मैंने जैसा चाहता हूँ, सो चेंज इट, राइट. अगर आपको वो नहीं लग रहा जैसा आप चाहते हो तो चेंज करो. तू जो तो बैठी हूँ मैं गली सोनिया. चित नाल लग जावां गली सोनिया. सुल्फां दी छां दा बथेरे बाल दे ना मैं ते तो बिना बक्की किते चली सोनिया. सो ये हमारी लीड वोकल्स थी. ओके ऑब्वियसली अब हमारे पास है ad-libs and I have misspelled ad-libs. It is okay. And ad-libs, I went crazy with it. I don't know what I did, but see all of these things. Yeah, I did everything here. I do not know why, but I did it. Okay, so let's go one by one. Again, some of these things already I showed you in the lead vocals, so like the chorus, the guitar, the compressor. I added another compressor. This is from the previous chain because मैं जो पिछली chain use कर रहा था वो उसके अंदर है. Okay, so we don't have auto tune yet. Okay, so जब वो आएगी तब करेंगे. हमने mids निकाल दिया, बिल्कुल mids निकाल दिया है और अब हम थोड़ा highs निकालेंगे. Again, ये ad-libs हैं. These won't be the first thing that the listener listens to, I guess. ये सबसे पहली चीज़ नहीं है जो एक person notice करेगा. That's why we're making it so that it's in the background. But let's listen to that again. So, अभी आजकल मैं क्या करने लगा हूँ? I've tried to use more plugins, more Ableton plugins, like native plugins, क्योंकि they're good, I guess. So, इसमें glue compressor मैंने क्या किया? I'm just EQing everything over 4.5 kilohertz. So that means जो भी 4500 hertz से ऊपर है वो सब compress होगा. जैसे आपने देखा, this compresses it a little bit. और फिर हमने एक normal compressor लाया. Okay, and then we have some auto tune. और ये है same scale में जो हमारा project का है. And then another soothe. Yeah, again, so जब भी ये singer ऊपर गाने लगती है ना तो she tends to get very screamy और एक scream को अच्छा sound करना is very hard. I try my best but it's very hard. And see, with this reverb, it's very nice. The reverb, it's a अगर आपने hybrid reverb नहीं use किया है Ableton का, it's very nice. It's very good. And what we're trying to do here is we're trying to put it in the background. So without this, listen to it. It's still in the front of your face. With this, it moves back, right, a little bit. And after that, we have an LFO, and this is where things get wild. So the LFO is manipulating the driver of the phaser flanger and the auto pan. Okay, I'll show you.
So अब आप notice कर रहे होगे कि ये काफ़ी left और right हो रही है. This is what we're trying to do. And obviously we have like reverses into leading into every other thing. इश्क निशाही तेरे इश्क निशाही चुकाती वे कुड़ केड़े राही पाती वे जो कल जुबान. Alright, so this is everything that we had in the song, and it's very simple. So अगर आपने पंजाबी गाने नहीं बनाए, why are you not doing it? So without everything, without delaying anything, let's listen to the bridge because it's my favorite part, and then I'll give you a send off. All right, please leave a like and subscribe, and let me know what you want to see next. तेरे इश्क निशाही चुकाती वे कुड़ केड़े राही पाती वे जो कल जुबानों कह न सकाओगी तो मेरे चुभ खाती वे. All right, that was it for this video, and I'll see you next time.